Hey all, Ankit this side from Streetflight team, and I welcome you back to my channel. So just took entry, just actually, I have taken entry at 9:15 only. I guess it's 9:13, so 15 minutes has already been done. I'm giving you update now. So I have taken this and this first, okay, and then I got a SL hit in this, bad SL hit I would say, at 39.98. okay, I was thinking of getting out from this at 37-38, but वो 40 पे निकला, तो 3 रुपये का जो एक्स्ट्रा हुआ उसके कारण मुझे इन दोनों में डिफरेंस काफ़ी आ गया. Okay, that point of time it was trading like 6k and it gave me loss of 12k, so 6k was the running loss. Can't help it, right? Although at a point of time I was up like 3k something, but yeah, that's fine. Now coming to this position, what is the adjustment for me now? See, I'm keeping my negative bias on every time. अगर आप अभी भी यहाँ भी देखोगे, मैंने इसे 23 पे सेल किया था और इसे 31 पे सेल किया, 32 पे सेल किया था. इसका मतलब कि मैंने 8-9 पॉइंट्स एक्स्ट्रा क्रेडिट अपने कॉल के साइड से रखा था. रीज़न इज वेरी सिंपल. आई जस्ट वांट माई आई एम हैविंग दैट नेगेटिव बायसनेस. ओके, एंड इफ यू वांट टू सी व्हाई, look at this OI. Today put writers are showing a bit of a strength in this particular strike, that is 17,900. Other than that, all other strikes are seeing immense amount of call writing, which simply shows that there is a negative bias on in this market. Negative biasness is there in the market. Okay, so I am keeping this with me also, but this time first time I already have done this mistake. Now I won't be repeating this thing. Okay, so my adjustment for now is, अगर ये 26 को क्रॉस करता है, 26.5 को क्रॉस करता है, तो फिर मैं इसे स्विच कर दूंगा 18,150 पे. ठीक है, इस तरीके से मैं अभी ट्रेड करने वाला हूँ. लेट्स सी इस पे क्या होता है. आई विल बी गिविंग अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. Okay guys, quick update. Time is 12:17 and as of now the running profit is 3k 4k, means in total I just have increased the quantity, by the way, just 500. I was trading with 1100 quantity only. At a few minutes back Zerodha completely hanged, so what I did here only, तो मैंने वहाँ पे एग्जिट करने के बाद फिर 1100 क्वांटिटी पे ट्रेड करा था. अभी जाकर के मैंने पोजीशन इंक्रीज़ किया है. ठीक है, और लेट्स सी हाउ मच डीके आई कैन कैपिटलाइज फ्रॉम हियर. बाय द वे, मूवमेंट इन निफ्टी इज नॉट दैट बिग, आई वुड से. It is actually consolidating from the past few days. It is consolidating, and the reason is quite simple. Market is having negative biasness, but the buying on the dip is continuously happening. तो यही हो रहा है. और मेरा जो पहला जो मैं बायसनेस था डाउन साइड, दैट कम्प्लीटली फेल्ड, और बिकॉज ऑफ दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई वॉज इन लॉस, लाइक हियर till here I was in loss. Okay, and there only I came to positive territory because of the downside, and now when this is going down, okay, some IVS spike happened suddenly, but that's completely fine with me. So now what is the adjustment point from here? Very simple. अगर ये अब इंक्रीज़ करता है 23, 24, ठीक है, तो फिर मैं 100 को 50 पे कन्वर्ट कर दूंगा इस पे, पूरा का पूरा पोजीशन. ठीक है, और अगर ये 23, 24 क्रॉस करता है तो फिर मैं इसे स्विच कर दूंगा 850 पे. तो दोनों अभी यहाँ है, आपको दिख रहा होगा. तो अगर ये 24 जाएगा तो ये फिर मोस्ट प्रोबेबली ये 27 पे जाएगा. ठीक है, तो ऑब्वियसली आई विल टेक एक्स्ट्रा क्रेडिट फ्रॉम दिस साइड. Yeah, this is what I will be doing. Okay, then I will be giving you update on this later on. Let's see how much more I can capitalize from here. Okay guys, quick update. Time is 2:40 and as of now the running profit is 13k something. So from here I am looking another 4k or like that. I think this is very possible from here. So the SL now is positive 6k. अगर वो 6k hit होगा तो I will just take the exit, or till then I will keep on doing the adjustment. Okay, and Nifty is more or less very sideways, I would say. Okay, yeah, obviously it is sideways only. It is ranging in a range today. अगर आपको रेंज देखना है तो obviously ये एक रेंज है. अरे वेट भाई, ये एक रेंज है आज का निफ्टी का, जो कि इसी रेंज पे है ये, और बिकॉज ऑफ दैट आई एम गेटिंग रियली गुड डिके. और अगर उस समय निफ्टी में अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, सॉरी काइट में अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ होता, तो जो 2 पोजीशन मैंने एग्जिट करा था, दीज 2 14 800 150,
ओके एट 19 एंड 15. तो अगर आप देखोगे 800 इज ट्रेडिंग एट वॉट 15 rupees almost, and 150 is trading at 10 rupees. So in total I could have got another what in that only 9 points, and 1400 into 9 points, you can calculate it yourself. So yeah, I missed that thing from there, and that could have been a risk off trade. But by playing aggressive, I think to some extent I just compensated that loss. But yeah, that's fine for me, I think. Yeah. और यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 6K इज़ वॉट विल बी माई ट्रेलिंग एसएल नाउ, क्योंकि मुझे लग रहा है आज 2K तो आज एसएल सॉरी ब्रोकरेज जाएगा, तो ऑब्वियसली 6K आज रहने दूंगा मैं, उसके बाद मैं उस पर कुछ एडजस्टमेंट नहीं करूँगा. और वाई आई एम स्टिल होल्डिंग, वाई आई हैवंट बुक्ड एट 13K 14K, बिकॉज सी टाइम इज 2:42. ओके, एंड आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट after 3 to 3:15 a good decay will happen. Okay, and yeah, I'm just here to capitalize on that. और if possible what I can do, मैं यहाँ से क्वांटिटी थोड़ा कम कर दूंगा और फिर मैं उस पर कैपिटलाइज करूँगा. ठीक है, दिस ऑल्सो इज़ एन ऑप्शन टू मी. तो सॉरी, सो आई विल बी डूइंग दैट ऑल्सो, आई कैन बी डूइंग दैट ऑल्सो. ओके, सो देयर इज नथिंग मोर टू टेल यू अबाउट दैट एडजस्टमेंट एंड ऑल, इट्स ऑलरेडी देयर. अगर ये 31 क्रॉस किया तो इसे स्विच कर दूंगा मैं 150 पे. ठीक है, और 100 पे सॉरी. अगर ये 30 क्रॉस किया तो इसे स्विच कर दूंगा मैं 800 पे. बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट पॉइंट है. लेट्स सी, आई विल बी गिविंग यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. ओके गाइज, अब फाइनल अपडेट. टाइम इज 3:05 3:06 and I exited everything now, and I booked 16.2K for now. And I don't think I will be taking entry for the next 10-15 minutes, although I know that in the next 10-15 minutes a good decay might happen from here, but that's fine. My target, I exceeded what I aimed for today. Okay, my target was just 10, 11, 12K for the day, and I managed to book 16 point something. Although if I will tell you one thing, that if you are seeing here, I'm continuously trading in a small quantity, no 1600 quantity, 1700 quantity, sorry 1600, 1500 quantity, that's it. I'm not taking the benefits of hedges. Okay, and I could have easily traded with 3K quantity today, and I could have managed to get what 25K, 30K for the day easily. But the thing here is now, I'm not comfortable with the risk reward that market is presenting. Why I'm saying this? Although market was completely range bound today, so it was an easy day for us. But the thing is, what if a big move will come? And looking at the VIX, it is not showing any kind of such volatility. But what if that will happen? In that particular case, I will be in a loss of 6-7 points in a matter of no time. Okay, so I will end up losing 20, 25K, 30K, which I'm not actually willing to right now. ठीक है, तो दैट्स वाई आई एम कंटिन्यूसली ट्रेडिंग विद अ स्मॉल क्वांटिटी, और मैं अभी शायद उसी को कंटिन्यू करूँगा. लिविंग थर्सडे ऑल अदर डेज आई विल कंटिन्यू दिस थिंग ओनली टिल एटलीस्ट फॉर दिस मंथ, क्योंकि व्हाट just one more week has to go in this particular month, and after then a new month has to be started. So in that month maybe I will play a bit aggressive, but this month I just want to play as conservative as I can. Leaving Thursday, I'm continuously saying that thing, that leaving Thursday, because on Thursday I always keep my risk very high, and so that reward also. So that's all from my end. I hope all these adjustment, all these plans are making sense to you, and if they do, then please do like, share and subscribe to my channel. Thanks a lot, and bye bye.